अभी इनमें थे ना, अभी यहाँ का कमेटी का है और अभी Ma'am, sir, respected Ma'am, sir. My name is I.N.D.I.A. I'm a victim. Then we have to remain homeless like this. But for the past more than 80 years, we have been staying together peacefully and no such violence like this has ever occurred. And Churachandpur. So, Ma'am and sir, you visited Churachandpur first. Why did you visit here? Did you witness them burning our houses? The destruction is but have you witnessed it? I'll just explain. First, visiting Churachandpur was for the reason that the chopper had a timeline. Here it was no timeline. But we were very sure. We are here for you, entire team, to listen to you and convey. You continue. Whatever you say shall be recorded here in our heart and mind. Yes. I visited this camp on 7th of July. Yeah. Please understand that. Okay. So, as a victim, right now, this issue broke out. But some reasons which are probable for this violence was due to the actions taken up by the state governments, like the implementation of NRC and illegal immigrants to be evicted since they were staying in reserve forest areas. Yes, and more than 15,400 acres of the land in Manipur was utilized for poppy plantation. With this, the Kuki militants are strongly against the Meitei. But why? Why the Meitei? What is our fault in it? Why not ask the government? Why not stand against the government? But why burn their houses, destroy our future, everything? We are youths. We are staying there at our village, at our home with full emotion. With emotions, we have been staying there for more than 80,000 and thousands of years. Churachandpur was taken from the king Maharaja Churachand. There for more than thousands and thousands of years during our forefathers, during our ancestrals. But now it's like we don't belong here. That day the violence broke out on the 3rd. Memo. We are with you, right? We are witnessing them burning our houses. We're so helpless. No state force were there to protect us. We could have been dead. How many times your chief minister has visited this camp? Not even once. Yes. Not even once. Not even once. Second, my query is whether the food and provisions that are required by you are being supplied by the state government or not? They were looked after by Now look up. the district administrative, of course. A little bit and then lot of... Little bit, but it was like most of them were from funds and How many? Do you have any Yes. idea how many of your neighbors have been evicted from Churachandpur? neighbors. How Total many? of more than 8,000 people were evacuated. 8,000. Yes. They have been evacuated. evicted. Evicted, yes. Evicted. All are, taking refuge here. Taking refugees in different parts of Different Manipur. one. Here, most of you are. Most of us are here. Around Large 4,000. chunk of the evicted Here, people. 4,000. 4,000. In Moirang and Bishnupur district, maybe around 5 more to than 4,000. 4,000. 4 to 5,000. So now government has been talking about the rehabilitation of you. We are totally against the rehabilitation organized by the government because they are taking us back to the border area. What they want us there? What they want us to do there? They want us to face again, or it's like we are scared for and running for our life. Now they are sending us back to the border area. What that means? And now continuously the Kuki are attacking. Even now, What you are all demanding to the state government? what we are demanding is for the issue, for the justice to be served, and to find out the root of evidence. We want to go back to our place to implement NRC.
पानी भी आ रहा है ऊपर से বৃষ্টি হলে উপর থেকে জল পড়ে আসে। सुल्तानपुर में सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कहाँ चला गया? उस दिन को मैंने सुल्तानपुर एसडीओ को बार बार कॉल किया, उसने क्या बोला, आ रहा है, हम लोग पहुंच गए, आपके गांव में ही है, हम लोग आर्मी असम राइफल लेके आ गया, हम लोग पहुंच रहे हैं। ये आवाज लेके कब आया? मैंने रात के अराउंड 7:30 को कॉल किया, वो लोग कब रेस्पॉन्ड किया? सुबह 3:30 को आया वो लोग असम राइफल लेके, घर जलाने के बाद, सारे गाँव जलने के बाद वो लोग आया। Trust us. आया, ठीक है, हम सिक्योरिटी करके रख दीजिए। क्यों लेके आया इधर? Trust us. All these voices. क्यों लेके आया इधर? I promise. करके सुल्तानपुर में हम रख दीजिए ना। I promise you. ये सारी सवाल on behalf of you we'll ask and we'll settle it. That's the promise. This is really happening, but we are for Manipur. We will continuously badge for Manipur. When the no confidence motion was moved in the parliament, you know what was the first response from the BJP? BJP told us no, they will come back to power. And what does it show? It shows the intention, the idea of BJP is to come back to power or how to retain its power. They are not at all careful of Manipur. The whole world is talking about Manipur. The European Union Parliament had discussed about this issue. Many others also. But the government is always careful of retaining the power. This is the case, and we are for Manipur. So we are here with a very strong message that we will bat for Manipur. We will continue our batting for Manipur. Human disaster. It could have been saved, provided the government got prompted to take stringent and immediate measure. The government has taken a decision to identify these foreigners. Home Ministry has said something like that. I saw Imo saying tweeted. But then मैम अभी तक तो हो रहा है, हो नहीं रहा अभी तक, फिलहाल तो हो नहीं रहा है। एंड रिसेंटली अटैक हो रहा है यहाँ पे फोगाक चौक में, एक बच्चा मर गया बॉम्बार्डमेंट में। आज भी अभी भी जो मैं रास्ते में आ रहा था, अभी भी चालू है, फायरिंग चालू है, अभी भी अटैक चालू है। ये कहाँ है? हिल्स में है कि यहाँ है? ये बॉर्डर एरिया में मैम, ये जो फोगाचक एरिया जो है कुकी एरिया का बॉर्डर एरिया है। मेन प्रॉब्लम बॉर्डर में ही हो रहा है। हाँ जी मैम। और जब हम लोग सुल्तानपुर में थे, हम लोग भाग के भी आया, उस टाइम में हम लोगों ने किसी क्या बोले, उन लोगों को अटैक, कुकी को अटैक नहीं किया, हम लोग बस भाग के आगे थे। और फिर देखो मैम, यहाँ पे जो रेफ्यूजी रहना ना, वो अटैक कर रहा है। यू कैन क्लियरली टेल दैट वहाँ पे ये जो म्यांमारीज का जो लुंगी रहता है ना मैम, वो डाल के वो बंदूक मार रहा है हम लोगों को। मैं अभी फोगाक चौक में रह रहा हूँ, अभी फिलहाल फॉर द मोमेंट अभी भी वहाँ पे बंदूक चल रहा है। एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर डेड ओवर देयर फ्रॉम बोथ द साइड। बड़ी समस्या है हथियार। जब ऐसी परिस्थिति तैयार होती है जहां आम जनता के हाथ में हथियार होती है, तो उससे किसी का फायदा नहीं होता, सबका नुकसान होता है। दूसरी बात, मेरा मानना है कि आस्था, मैं पहले भी बोली थी, अभी भी बोल रही हूँ, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के ऊपर विश्वास नहीं रहा, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो किसी भी कम्युनिटी का विश्वास नहीं रहा। इधर वैली में भी बोल रहे हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, उधर हिल्स में भी बोल रहे हैं पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो ये मुझे तो लगता है ये इज अ क्लियर कट केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो मैं प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना कहूंगी, आपने उत्तराखंड में सीएम बदला, आपने गुजरात में सीएम बदला, आपने त्रिपुरा में सीएम बदला, ये क्या रहस्य है कि मणिपुर के लोगों की आवाज सुनकर आप यहाँ परिवर्तन नहीं करना चाहते? कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है। मणिपुर एक वैसा मुद्दा है। सीएम ने कहा लोग हमें रेजिग्नेशन देना नहीं चाहते, हमें घर से निकलने नहीं दे रहे हैं कि मैं जा पाऊं रेजिग्नेशन देने। देखिए, मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं कि लोग नहीं चाहते, हर मुख्यमंत्री का जो एक नेता है उसके साथ कुछ ना कुछ सपोर्टर्स तो रहेंगे, वरना वो किस तरह का मुख्यमंत्री है। पर आम जनता जो नॉन पॉलिटिकल कॉमन मैन है,
वो एक परिवर्तन चाह रहे हैं इस उम्मीद से कि उनकी प्रदेश की परिस्थिति में परिवर्तन है। इट इज नथिंग पर्सनल, पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के समझ नहीं पा रहे यहाँ क्या हो रहा है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ठीक से ब्रीफ नहीं कर रहे, या ब्रीफ कर रहे पर प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे बात को। और मेरा मानना है इमीडिएटली अगर इसका सल्यूशन ना हो दोनों पक्षों का, मैं जो देख रही हूँ जिस तरह का गुस्सा दो कम्युनिटीज में है, जिस तरह का डिसअपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के प्रति है, स्टेट पुलिस के प्रति है, ये इस ऐसे लेवल पे ना चले जाए कि कोई कुछ ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी केरला से, हमारे पिताजी दिल्ली से है। बैठे आप, बैठे आप। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारा भाई है क्या? भाई बहन? माँ बाप माँ है, माँ है। इसकी माँ किधर है? मनाल की इसकी माँ किधर है? यहाँ पे कितने लोग हैं? आप इसकी माँ हो? प्राउड, शान में बड़ा होशियार लड़का। यहाँ कितने लोग सर? क्या हुआ? घर भी गया? क्या हुआ आपके बारे में? हाँ बताओ, बोलिए। आप कोई भी एक बताओ, क्या हुआ? What is enough? मैं मोरे से हूँ। क्या हुआ उस दिन फर्स्ट May 3rd में सुजानपुर में जब भी ऐसा क्राइसिस घंटी बजता है तो हम लोग घर के अंदर में चुपना है, क्योंकि ये पहले बार नहीं हुआ है। 2015 में भी उन लोग ने हमारा सामान लेके तोड़ के बाहर में जलाने वाला वीडियोस भी है, वो आप लोग ने देखा भी होगा। तो हम लोग का एक है पुलिस वाला स्टेट फोर्स को, उन लोग अगर कुछ भी करना है तो स्टेट फोर्स का जगह में उन लोग का क्या बोलता है, इन फ्रंट ऑफ द गेट दे विल बर्न पुलिस गेट, इवन दे विल ओपन फायर ऑन द पुलिस। अगर पुलिस लोग तक अंदर में है तो हम क्या आम इंसान के पास आर्म्स कहाँ से? वही तो हम भी, दे आर हैविंग सू विद आर्मी, आई अंडरस्टैंड, बट आर्मी ने सप्लाई किया, किसने किया, वी डोंट नो, बट दे वेर वेरी हेवीली आर्म्ड। आप देख सकते हैं उस दिन में भी आर्म किया वाला वीडियो भी है। उस दिन आर्मी था, उस दिन, हाँ ना, क्यों नहीं, पुलिस भी था। मोरे ऐसा जगह है जहाँ पे चारों तरफ आर्मी ने माने सराउंडेड, हाँ आर्मी ने सराउंडेड है। आर्मी ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। आप फिर एक वो लोग आया, बहुत सारा आदमी आया, हम लोग अपने अपना घर में दरवाजा बंद करके चुप, क्योंकि उन लोग के पास तो गन होगा, हमारे पास तो वी डोंट हैव एनी डिफेंस। अगर डिफेंस भी होता ना, चलाएगा गोली तो आर्मी उल्टा हम लोग को पकड़ के मार पीट करेंगे। तो वहाँ पे आपका कितना घर है? बहुत सारा है। तो सब का अभी घर है या घर अभी नहीं? पूरा हम लोग पूरा बिल्कुल, वी हैव नथिंग लेफ्ट, नो हाउस। We have how many people died? How many families? How many people died? I think 5 or 2 exactly, क्योंकि हम लोग क्राइसिस में हम लोग भाग दौड़ करके हम लोग कहीं किसी और पे किसी, हाँ we are safely, we are in safe place। घर कितने जले होंगे? घर तो बहुत सारा है,
कितना यहाँ इतने लोग हैं हाँ तो जितने उस ये खाली नहीं है और भी बहुत सारा है। हाँ बहुत सारा का घर जला हुआ है। मगर कैसे हुआ बोलने से अराउंड 4-5 के बजे टाइमिंग होगा तो वो लोग बेल बजाने शुरू किया तो हम अपने अपने घर पे है। तो फिर क्या हुआ वो लोग चिल्लाने चोरने रास्ते पे आना ये शुरू किया। फिर बाद में एक घर नहीं मोरे का बात चल रही है। हम लोग तो यहाँ पे रिफ्यूजी जैसा ठहर रही हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं हम अपना घर में वापस जाओ अच्छे से सुरक्षा जैसे हमारा स्टेट फोर्स को उसको पावर दे क्योंकि दे डोंट हैव एनी पावर। इस बार भी थोड़ा कुछ बचा हुआ घर भी बचाना था। आर्मी वाला ने उन लोगों को दिस इज आवर ड्यूटी नॉट योर ड्यूटी यू डोंट हैव टू इंटरफेयर करके लो करके रखा। देन क्या है तो जो घर जल गया है उसे फिर से बनाना होगा फिर से बनाना ही पड़ेगा। हाँ बना तो हम लोग कहाँ रहेंगे हमेशा यहाँ पे तो क्या चीज़ का घर था? अरे हर कच्चा मकान कच्चा पक्का सब अपना क्योंकि हम लोग मोरे में रहने वाला बिजनेस भी करने वाला है मजदूरी भी है लेबर भी है सब है। अभी कितने दिन हुए यहाँ इधर आके कितने दिन हुए आपको यहाँ इस कैंप पे? हम 3 मंथ्स कैंप पे। हाँ तब तक कोई घर नहीं कोई यहाँ से रेफर जो करते अभी जो बच्चे लोग स्कूल कैसे आते हैं बच्चे लोग पैदल से जाते हैं। फिर आप सुनिए ना खाली देखो जितने भी MLA जितने भी मंत्री वगैरह आया सुन के तो चले जाते हैं मगर करता कुछ नहीं है हमारे लिए। हम मैतेईस ना इतना ये नहीं है शुरुआत उन लोग ने किया मगर उन लोग को खाली राइट्स दे रहा है। अभी आर्मी जो है यहाँ क्या बोलेगा वैली में उन लोग खाली स्टैंडिंग करके जो भी प्रोटेस्ट आता है उसको मार देते हैं मगर वहाँ में गोलीबारी हो रहा है उसमें किया कुछ किया नहीं ना। मोरे में कितना 3 मई में जला 28 मई में जला और उसके बाद जो 28 में क्या था 28 में भी घर फिर दोबारा जलाया जो बचा था अप्रैल 28 हाँ नो मई 3 में शुरू किया था। फिर थोड़ा कुछ घर बचा था उन लोग ने जलाया तो हमने आर्मी को भी बहुत रिक्वेस्ट किया था कि बचाए हमें। आइडेंटिफाई कैसे करते आपको कि आपके घर जलाने हैं? घर जलाते हो कैसे मालूम पड़ता है कि यहाँ मैतेई ही रहते हैं? नहीं मैतेई यहाँ रहते हैं सब लोग। हाँ। कैसे आइडेंटिफाई हुआ? मैतेई का लोग है ना वो लोग तो लोग उनको कैसे मालूम पड़ा यहाँ सब मैतेई देखो रहते हैं? यहाँ का बात नहीं है सर हम जो जहाँ गाँव में रहते हैं क्योंकि बोलने से हम लोग मिक्स करके तो रिया है ना वी आर तो वो कैसे रहे? जो लोग ने अटैक किया वो लोकल थे या बाहर के थे? हाँ। देखिए ना वो हम बताएंगे ठीक है ना। हम लोग का सेल्सियस में हम लोग का गवर्नमेंट में हम वी हैव नो राइट्स टू वोट देयर पता है ना। इस बार भी कैसे जीता बोलने से ना हम लोग को ना अरे आप लोग आराम से रहिए आइए मत हम जो भी करना है हम हाँ इलेक्शन हम एक बार भी वोट नहीं दिए। क्यों? कितने इलेक्शंस हो अनकाउंटेबल हुआ है मगर हाँ पापा लोग दिए थे कांग्रेस के टाइम में ना दिए थे मगर इस बार जो हम विटनेस है जो बीजेपी के समय में इस बार जो हुआ है उसमें हम लोग कभी ये नहीं दिए थे। आराम से बैठिए आप लोग को थोड़ा कुछ पैसा दे के बस हो गया काम खत्म। किसी ने भी नहीं जो हम देने जाएंगे ना तो हमें आप कहाँ में हमको ये देना है वो आदमी को मारता है वो लोग पीटता है। कौन लोग? ये कुकीज लोग ये है ना उनका जगह। हाँ क्योंकि हम लोग ना माइनॉरिटीज हो पहले गए। क्या करना है? पहले आपको घर देने की आवश्यकता है और सुरक्षा देने की आवश्यकता है। हाँ जो सुरक्षा हम सेंट्रल फोर्स हम नहीं जो आए हैं चाहिए। ना, हाँ हम सारे सेंट्रल फोर्स हमें नहीं चाहिए असम राइफल। हम अब सारे सांसद हैं राज्यसभा से लोकसभा से सभी पार्टी के। ये गौगाई साहब है ये हमारी कांग्रेस पार्टी के है ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के है मैं शिवसेना का हूँ ये मुस्लिम लीग के है ये हमारे प्रेमचंद जी कर्नाटक के केरला से है ये आम आदमी पार्टी के है ये झारखंड JMM की है ये हमारे नीतीश कुमार साहब की जो पार्टी उसकी राष्ट्रीय जनता ये सारे नेतागण हैं और हम लोग सब लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाने के लिए अब बिना देखे क्या बोले वहाँ अखबार में पढ़ के बोलने से अच्छा है कि आपसे मिले ये सोचकर हम आपके पास आए हैं। आपकी सारी बातें हम सुनकर अगर कोई लिखित में भी देना चाहे तो कल अगर कोई मुद्दे लिखित में दे देगा तो हम ही संसद में आपके लिए आवाज उठाएंगे। कल हम माननीय राज्यपाल मैडम से भी मिलने वाले हैं तो पहले हम बात करेंगे आपके घर की बात करेंगे। Even our honorable Home Minister have visited our land. Yes, and he promised us that he will bring peace. Until then, a month have passed and there is no peace. And so
Yeah, he have visited and he have promised. We are only looking forward to his words only, and he promised have gone vain. Yeah, it's already gone in vain. What do you want? We want a home. Since we don't have a home now. Back in Moreh? I'm from Chorchandpur. I'm not from Moreh. I'm from Chorchandpur where that incident happened. Yeah. And so, sir, the government have planned to rehabilitate us, to give us home in some areas. But in the same place, same village. No, sir. There is also places. We don't want that. Has the government approached you आप to ये जो गवर्नमेंट देने जा रहा है ना, वो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए अपना वहाँ पे बनाए, अपना घर पे बनाए, जहाँ हमारा थे. And sir, about Chorchandpur, for the people living in Chorchandpur, the government have made a rehabilitation home for us to settle there in Kokta area. That is the name of the place, locality. This war happened first in the Chorchandpur district, in the Torbung Bangla area, on 3rd of May, from 3 p.m. to 4 p.m. evening like that. From 3rd of May, it start, and till now, there's no stopping of violence, no stopping of firing guns. There's full of violence. government's initiative in order to vacate them, evict them from the reserve forest, and they find the ST as an only issue that has been brought up. How do you look into it? No, that is why in Delhi, I said that there must be an inquiry by a retired Supreme Court judge to find out the breakdown in law and order and how so many homes were attacked, how people were attacked and assaulted. So that is why there has to be an inquiry by a retired Supreme Court judge, because there has been a complete breakdown in law and order machinery, and what we have seen today, that people are still very afraid. They have been in camps. They don't have the faith to return to their homes as of now. ये 1981 में कांग्रेस सरकार ने इसको नोटिफाइड करके टाउन कमेटी बनाई। अभी अचानक इसको 10 साल के बाद में हम 2 दफा चुना हुआ और अचानक इसको एबोलिश कर दिया टाउन कमेटी। 15 साल हो गया, अभी तक टाउन कमेटी इलेक्शन नहीं हुआ। हम लोग चाहिए नंबर 1, हम लोग को वापस जाना है। हम लोग सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए, अपना जमीन जगह में हम लोग जाके घर बना के हम लोग वो जो भी हो मिलेगा वो खा के हम लोग उधर जिंदा रहेगा। मोरे नहीं छोड़ेगा हम लोग। ये नंबर 1 रेवेन्यू कलेक्शन इम्फाल, नंबर 2 रेवेन्यू कलेक्शन मोरे। मोरे को हम लोग का हाथ से चला गया तो इंडिया चला गया सोचिए। अभी हम लोग को वापस आना, पहला वापस जाके उधर में हम लोग को रिसेटल करने के लिए कोशिश अरेंजमेंट कीजिए। नंबर 2 उधर में कमांडो
स्पेशल कमांडो, IRB, CRP जितना है हम लोग को उधर में पूरा भर्ती कीजिए, हम लोग का जान बचाइए। अभी जो लड़ाई चल रहा है ये हिंदू और क्रिश्चियन का लड़ाई नहीं है सर। ये शुरू कहाँ से किया और किसने किया? ये तो 3 तारीख में किसने शुरू किया, किसने लड़ाई किया? ये मैते हिंदू और कुकी का लड़ाई नहीं है। कुकी लोग ने हम लोग का मैते हिंदू लोग को ऊपर में हमला किया है सर। अभी तक हम लोग ने वो लोग को ऊपर में हमला नहीं किया, वो लोग ने हम लोग को ऊपर में हमला किया। कल परसों भी लड़ाई करते रहा है, वहाँ में बम फेंका, कितना आदमी मर गया, कितना घर जला दिया, मोरे में भी कितना घर जला दिया। हम लोग ने परसों भी जलाया, कल परसों में भी जलाया, अभी उधर में चुरचानपुर तरफ में भी जलाया। वो जगह तो आप लोग को देखेगा नहीं, क्यों बोले से आप लोग हाईवे में जाएगा, यहाँ जाने से भी हेलीकॉप्टर में जाएगा। हाईवे में जाने से आप लोग को सब पता चल जाएगा हम लोग मणिपुरी हिंदू लोग का कितना घर जला दिया, कितना गांव बर्बाद हो गया, ये सब आप लोग को दिखाई देगा। क्यों बोलने से अभी हम लोग के ऊपर में, वो लोग का ऊपर में हम लोग ने हमला नहीं किया, वो लोग ने हम लोग के ऊपर में हमला किया। चुरचानपुर में शुरू में हम लोग का बहन बेटी लोग का कितना गलत वो लोग ने किया है, मगर आज तक हम लोग ने न्यूज़ में नहीं डाला। क्यों बोलने से वो इज्जत का सवाल है, खाली वो हमारा इज्जत का सवाल नहीं है, भारत की इज्जत का सवाल है। हम लोग ने आज तक नहीं डाला, मगर वो लोग ने खाली हम लोग का गुस्सा से जो किया है। लड़ाई तो लड़ाई, गुस्सा से कुछ भी कर सकता है, मगर हम लोग बोल नहीं सकता कौन क्या करेगा। मगर वो खाली वो 3-4 सेकेंड का जो वीडियो ने हम लोग को पूरा शर्म कर दिया, पूरा हम लोग को गलत ठहरा दिया, पूरा मैते लोग पूरा गलत है, पूरा जानवर जैसा हम लोग को बना दिया बाहर में। मगर वो लोग ने जो किया है मगर किसी ने नहीं देखा। हम लोग ने भी आज तक फेसबुक में और व्हाट्सएप में किसी को हम लोग ने नहीं दिया, न्यूज़ में नहीं दिया, मगर वो लोग ने शुरू में वो लोग ने किया। मगर उसकी वजह से गुस्सा से हम लोग का यहाँ वहाँ में थोड़ा हम लोग का नज़दीक में जो कुकी लोग का घर 3-4 घर था, वो लोग को तोड़ करके वो भी गुस्सा से वजह से ये लड़ा। क्यों बोलने से वो लोग ने हम लोग के ऊपर में कितना गलत, कितना अत्याचार किया, गोली मार के हम लोग के कितना गाँव अभी 6,000-7,500 से ऊपर हम लोग का घर पूरा बर्बाद कर दिया, कितना गाँव खाली कर दिया। अभी तक हम लोग खेती बाड़ी करने नहीं सकता, गोली डेली के डेली गोली मारते रहता है। मैम कोई मोरी ने चुरचानपुर लापा मैतैसिंग हाइबे तारे रिलीफ कैंप लेबिरीबे हजिक था 3 फागदर हंदक लाइबा तांग 3 जदि था 3 फारनी हजिक सिदा लाक्पीरीबे नोय हानसु ताबीरमगनी नहान हेक तांग कुंदगी पार्लियामेंट सेशन फंबा हेक हौबदगी अखोयगी मणिपुर गिदमक्तदा कोइबा मणिपुर शांति लेतबा तौरिबा हानबा सुनबा युम कई मई थादोकबा खोतोकबा मयाम से मसीगी दमक्तदा नोय अदुम हुजिक उबिरमनि होय इंटरनेट बैन लेबदुना नोय फजनादि उबिरम दबा याय ऑनरेबल एमपी लाइबजिंग हे तोंगान बा पॉलिटिकल पार्टी की वखन मानबा हाइबे तारे कांग्रेस तकी यावरे अदुगा एनसीपी की अदुगा डीएमके की मयाम सी पुल्लगा तोंगान बा पॉलिटिकल पार्टी इंडिया हाइबा अनोबा अलायंस अमा सेमे नोय मयाम ताबिरमनि मधुगी तोंगान बा पॉलिटिकल पार्टी की वखन मानबा लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी दुगी ऑनरेबल एमपी नातनी से लाइबसे मोय पार्लियामेंट दा ngasiga hayengasi session leitaba aduna ada dum paw lawrga lawnabani khonabni karigino ngasi phawba prime minister modi na wa boba mai machindagi manipur da thoiba hana sunaba thoiba violence tawriba hingsa tawriba mayam amaga hana risingse angam ba hana sunu angam bana pala sunu na hairibra manipur se koi india gi sarka man natabra na handai noi mayam lawidna karigino ngasi boba prime minister na wahi mongangdana लेरिसी करिगिनो हाइबदो अदु लाइबा ऑनरेबल एमपी सिंगसिना आदा खबर द कागज द इंटरनेट द पेज तौरग तौबनी अदु सिदा लागा ऑन द स्पॉट ग्राउंड सिचुएशन से फजना कोई येंगोनसी एसेस तौसी नोई मयाम करमाइना वारी हुजि का अहु मरिका कोई संग येंगे का अमदा अखोई प्राइवेसी की लेटर्स फॉरगेट अबाउट प्राइवेसी अमंग मसा सिंगसि तौरग नोई से लेइबा मयाम से अहुम लोम से लेइबा मयाम से मसे आदा चलगा नोई अवाबा नोई नुआइतबा सिदा अंगांग स्कूल थादबा अदुगा अना येक मयाम अदुई मथक्ता हनुबा हनुबी मयाम यावरिबा तौरिब मयाम से मसी की ग्राउंड सिचुएशन से फजना खंगतोगा
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯐꯥꯎ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯗ ꯑꯇꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯨꯡ 10 ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧ ꯑꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯛꯇꯅ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯈꯨꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯛꯇꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯁꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯥ 3 ꯍꯦꯜꯂꯛꯏꯕ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯨꯝꯃꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒ ꯀꯣ ꯃꯐꯝ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯆꯠꯂꯨꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯆꯪꯉꯁꯨꯀꯣ आधा पार्लियामेंट में तौनरने को Respected sir, I will take only a few seconds. Upon this story, please bring in a parliament. Our life depending upon you, sir. So, with due respect. सुनिए सुनिए हम सब लोग आपके लिए आए हैं आपकी समस्याओं को पूरे देश देख रहा है पूरा देश मणिपुर के लिए कंसर्न है आपके लिए ही हम यहाँ पे आए हैं आपकी आवाज को देश की पार्लियामेंट में उठाने के लिए आए हैं और आपके दुख के अंदर हम साथ हैं ये सारी पार्टियां आपके सामने आई हैं आपकी आप बीती को देखने के लिए क्या जुल्म यहाँ पे हो रहा है गवर्नमेंट क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है इसका असेसमेंट करने के लिए इसको केंद्र सरकार को भी हम कहेंगे आपके गवर्नर से भी मिलेंगे आपके मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे और भरसक प्रयत्न करेंगे कि इन चीज़ों का हल निकले पीस और हारमोनी दोबारा मणिपुर के अंदर लौटे आप सब लोग रिलीफ कैंप्स के अंदर लंबे समय नहीं रह सकते आफ्टर ऑल बच्चों को स्कूल जाना है कॉलेज जाना है आपको अपने घर में रहना है आप हौसला रखें हम सब आपके लिए आए Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. We are joined by the senior leaders of the India Alliance. We have with us on my left Sri Kanimoji Karunanidhi from the DMK. On her left we have Megha Chandraji, who is the Pradesh Congress President. We have Santosh Kumarji from the CPI. We have Aam Aadmi Party. We have Sushil Gupta ji. We have IUML. On his left, Mohammad Bashir ji. From the INC, we have K. Suresh ji. I'm just naming the India delegation members. On my right, I have CLP leader, former Chief Minister Ibobi Singh ji. On his right, we have from RSP, Premachandran ji. On his right, we have from GMM Jharkhand, Srimati Mahua Maji ji. We have from CPIM, Shri A.A. Rahim ji. On his right, we have Sushmita Dev from TMC. On her right, we have Shri Tirutol Tiruvamalam from VCK. And of course, we have Gaikhanam ji, senior leader from the Manipur Pradesh Congress. Today has been a very difficult day for us.
because we have read about the suffering of the people of Manipur. We have heard about the suffering of the people of Manipur. But today we got a chance to meet them ourselves and listen to their stories. And it has been a very difficult day because we went to 4 relief camps, 2 in Churachandpur, 1 in Imphal, 1 in Moirang. And it has not been easy. Many times women, while speaking to us, broke down. Many times children spoke about how they lost a brother. Many times villagers said that how they were caught simply unaware when a mob attacked them. And everybody wants peace. And everybody wants to rebuild their lives. And today our 2 teams have just finished our tour. We are going to meet later on in the evening to discuss our observations. We have not got a chance to interact with each other, the 2 groups. So we will be meeting to share our observations, share our experiences. And tomorrow, as you know, we will be meeting the Honorable Governor with a memorandum. And everywhere wherever we have gone, we have only said that we have come here to listen. We've come here to listen to the people of Manipur. We have come here to understand what their fears are. We have come here to understand what their expectations are. And we will take that and reflect that in the parliament and reflect that in our meetings. So that is all I wanted to say. And we hope that peace and normalcy returns to Manipur soon and there's justice for everyone. So what's the peace theory the opposition, the Team India has for Manipur? What's the peace theory? Well, as I said, we have come here to listen first. We have not come here with a theory. It's been day 1. Our 2 groups have met, have gone to different relief camps. We've listened to different stories. So we also need to come together, discuss and present our memorandum to the governor. But no doubt we feel that Parliament should have a discussion on this, whether it's under Rule 267 in Rajya Sabha, whether it's under the no confidence motion. I think too much delay has happened. We should have a discussion because the government, the Union Government of India has to give a roadmap, and we all want to listen to what the plan the government has, and of course we will give our constructive suggestions. When you meet peoples there at relief camps, so what are the difference between the people's comments from Churachandpur district and Imphal and Misripur district? What are the differences in their opinions regarding this? No, everybody had a story of suffering. Everybody has suffered. Right. In the end, we are all humans. We have all seen our houses being burnt. We have seen our neighbors turning on neighbors. It has been, we are still processing that pain and suffering. Everybody has suffered. Have you visited any abandoned military villages at Churachandpur? You have our program. We have submitted our program and got the permission. A team went to the Moirang. A team, Moirang you said? Yeah. So one team has. Abandoned military villages at Churachandpur and also at Misripur district. No, we haven't visited the villages. We've visited only the relief camps. Any plan to visit the places? Right now, we have our program is that we wanted to visit the people in the relief camps to hear their stories, because they have talked about abandoned villages. They have talked about, as I said, our neighbors have turned on neighbors. And again, we are the only delegation, India Alliance is the only delegation which is continuously visiting Manipur. Our MPs from CPI have visited, TMC has visited, Congress has visited. The only national leader from India Alliance has come, Rahul Gandhi ji. So we are the only one who are present. And we have always said that if the Prime Minister wants to lead an all-party delegation, we would be happy to be part of it, because it is a part of India that we care so much about, and we want in the end peace and normalcy to return.
dialogue is important. Will the India take any initiative so that dialogue takes place? The dialogue has to begin in Parliament first. That is what we're wanting. We're wanting a dialogue in the Parliament, and let us send a united message of solidarity to Manipur, to let the people not feel as if the rest of India has forgotten. India is here. We have political parties from West Bengal, from Jharkhand, from Tamil Nadu, from Kerala. We are all here to have a dialogue with the people, and we want their voices and their concerns to be represented in the Parliament. Sir, in your visit to the relief camps, could you find out that what went wrong and why it is continuing for the last 3 months, why it is not being controlled? As I said, our two groups have yet to come together. We've listened to a lot of stories, but we also need some time to discuss and reflect. As I said, it has been, everybody has suffered, everybody has felt pain. I don't know if anybody else wants to say on this, but we also need time, and then we will present our collective view and recommendations to the Honorable Governor tomorrow. Sir, some of the issues facing Manipur and this violence is part of these issues of territorial integrity of Manipur and the issue of illegal immigrants in Manipur. What is India's stand on these two issues? As I said, we've been reading a lot about these issues. But today we've interacted with the people. We've learned. We went to the ground. We're the only India Alliance is the only group of political parties that have come and are spending 2 days in Manipur just to understand the complexity of these issues. And obviously, after we understand the complexity, we are going to present our joint views both in the Parliament and in a memorandum to the Honorable Governor. See, BJP has raised a point that it's only for the photo opportunity that you all have. Let them come. Who's stopping them from coming? Why don't they also come? Prime Minister should come. Prime Minister should lead an all-party delegation. Who's stopping them? Why are they not here? Where is I.N.D.I.A? Why is I.N.D.I.A allies not here? What is I.N.D.I.A doing? So my question is, let us all come. It is not the pain that we are feeling. Everybody in India is feeling that how this beautiful state is being divided, and people, as you said, for the past 3 months are living in refugee camps. We are all with the people of Manipur on this, and we are, I think all political parties and definitely national political leaders should come and see what's the situation on the ground is. And meeting people is not a sin, no? Meeting people, visiting refugee camps is not a sin. So how can they say that? Anybody wants to make a... But one thing is very clear. The government of Manipur is failed miserably, and the central government is not ready to discuss. At least the pain of the people of the Manipur must be discussed and try to resolve something so peace and harmony can come back. And let me add one thing. Even the European Union Parliament had discussed the issue. But our Prime Minister had no time to intervene in this matter. Once only he replied to a query after this video, then his answer was quite strange. He was of the opinion that this is not only happening in Manipur, this is happening in Rajasthan and Chhattisgarh. Because a Prime Minister should not speak like that. This is happening everywhere in my country, means what kind of a world it is. So this team, the India team is here to understand the agony and pain of the people. We are united, as our team leader stated. We will come up with a solution tomorrow or day after. It depends. Minister Ibowi Singh ji in the Parliament, the first thing he told us that Manipur is a small state, but we are so touched that the entire opposition is unitedly fighting inside Parliament for the state of Manipur. Saying discuss Manipur, give justice to Manipur, because coming from northeastern states, one has that feeling that people will forget us, in the Parliament. So I think that was very reassuring for us, because you see BJP says, oh, photo op. BJP will say, look, there is disruption in Parliament. That BJP will say, oh, look, they don't want to debate it. But I hope that the people of Manipur understand that the alliance of parties under the banner of India stand with you, and we will fight till the last day of the session to make the Prime Minister accountable to the state of Manipur. Thank you so much.
माननीय गृह मंत्री जी यहाँ 3 दिन रहे थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ शांति बहाली हो गई, लेकिन हम लोग जिन भी कैंप में गए दोनों तरफ के लोगों ने कहा कि अभी भी वहाँ पे फायरिंग हो रही है, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। कल भी कोई घटना हुई है, परसों भी हुई है, घर भी जलाए गए हैं। तो इस तरह से देश के सामने ये सच्चाई को न लाना ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। और एक कैंप में हमने देखा कि मेडिकल स्टूडेंट्स फिर जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनका एक कहना था बच्चों का कि दूसरे कम्युनिटी के लोग जा रहे हैं कॉलेज में बट उनकी पढ़ाई रुक गई है क्योंकि वो नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि उनका भी करियर खराब हो रहा है। और बाकी औरतें और बच्चे दोनों कैंप्स में दोनों समुदाय के बच्चे और जो लेडीज़ हैं दोनों की एक जैसी समस्या है। वे सभी चाहते हैं कि अपने अपने घरों में आकर वापस जाएं, शांति बहाली हो। वो कहीं और जाके रहना नहीं चाहते। सरकार उनको जो घर जो मोहल्ला मुहैया करा रही है वहाँ उनको नहीं जाना है। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम अपनी जगह पे लौटना चाहते हैं, हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। तो इस पर भी आप लोग को There's an important memorandum that we have to prepare. I'll just give the final word to Kanimozi ji and then we'll close. What we saw today was a wounded state. People are all very hurt and they feel very let down by the government. They really feel that the government has not intervened in the right moment and they just let the violence continue. They feel that there is no political will and it's just not one side of the people who feel that. All the people from the different communities feel very let down by the government and they've lost faith in the Chief Minister. And we see that even the camps are not in a good condition. Basic facilities are not there. Food is not provided. The children do not get enough milk. There's not enough food being distributed in the camps. So people living in camps are also suffering. It's just not only that they've had to flee their homes and they had to walk and they're living in these makeshift shelters. The condition in which they're forced to live in these camps are also appalling. So you can really see that the government is not reaching out to them, does not care about them, and it is just not the state government, it is also the union government which doesn't care. We are here to show the people that we care, to listen to them, but where is the union government, where is the state government, what is it doing, why doesn't it reach out and talk to these people and find out what they want to resolve the issue. Okay, thank you very much, thank you. मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 सांसदों लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहिबा खुद अपना पीड़ा दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा। और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए
बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्तापक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए और यहाँ आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है। हमारे सारे मुद्दा हम उनके समीप रखे थे कि वैली के लोग हिल नहीं जा पाते, हिल के लोग वैली नहीं आ पाते, राशन खाना दवाई सारे जाना बंद हो चुके हैं, छात्रों को पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं और लोगों की सारे पीड़ा दुर्दशा को जो हमने देखे कल से सारे विस्तार रूप से हम बयान किए हैं और हमारी सारे बात मानते हुए राज्यपाल साहिबा सहमत जताते हुए सबको एक साथ एकजुट होकर ये मणिपुर की समस्याओं को हल निकालने के लिए कदम उठाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, ये उनकी तरफ से हमें कहे गए। हम भी सहमत जताए और अगले दिन हम भी मणिपुर की मसला समाधान करने के लिए केंद्र की सरकार पे सदन में मौका मिलते ही अपनी तरफ से हम दबाव डालेंगे। सूबे की सरकार केंद्र की सरकार की जो खामियां हमें देखे गए, यहाँ की आम लोगों को जो सरकार के खिलाफ जो शिकायतें हैं, ये सारे मुद्दा हम लोग सदन के अंदर हम रखेंगे। तो जितना जल्दी हो सके ये सदन चलाने की अपील भी कर रहे हैं। आप लोगों की बदौलत हमारे हिंदुस्तान की सरकार को जो ज्यादा देर ना करते हुए हमारे अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकारते हुए जल्द से जल्द मणिपुर की हाल निकालने के कोई चर्चा होना चाहिए, क्योंकि मणिपुर की हाल दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें हमारे देश की हमारे सिक्योरिटी की खतरा पैदा होते जा रहे हैं। तो इसके मद्देनजर सब मिल के हम प्रयास करेंगे, यही हम कह के आज 21 मेंबरों ने जो डेलीगेशन लाए थे हम गवर्नर साहिबा को ये बात रखे हैं। हिंसा पे सरकार को दबाव बनाए और सरकार लगातार किया गया है, घरों में आगजनी कर दी गई है, लोगों को रहने में काफी दिक्कत है, मेडिसिन की सुविधा और खाने की दिक्कत होती है। और ये देखिए 21 जो संसदों की जो यहाँ पे टीम थी राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद सारी टीम यहाँ से दिल्ली जा रही है और उनका कहना है कि हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ पे आवाज को पूरी तरह से संसद में उठाएंगे। देखिए जो सारी टीमें हैं यहाँ पे राजभवन में यहाँ राज्यपाल से मुलाकात किए हैं और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद एक टीमें धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल रही है। देखिए किस तरह से आज यहाँ पे राज्यपाल के बाद घंटों मीटिंग के बाद यहाँ पे मणिपुर के हालात पे चर्चा हुआ है और सरकार पे कैसे दबाव